Hello students, myself Niyati Chauhan, Assistant Professor at LJ Institute of Engineering and Technology. In today's session, we will learn wastewater level measurement techniques. In last to last lecture, I have started ultrasonic level measurement technique. In last lecture, I have explained differential pressure sensors and bubblers. And in today's session, I explain capacitance method and side classes or gauges. So next method, capacitance. Capacitive sensors are available for point level detection or for continuous level measurement with a long probe immersed in a tank. Means here we are using a capacitive sensor for point level detection, right? If we want to measure point to point level, right, then we can use capacitive sensor. And also continuously level measurement, right? Capacitance sensors typically consist of insulated electrical conductors and use a radio frequency signal on the sensor. Capacitance sensor consist of insulated electrical conductors, right? मीन्स जो कैपेसिटर सेंसर्स है वो किसके बने हैं? इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के। और वो यूज करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर के ऊपर। To calculate level, they measure a change in electrical capacitance between the sensor and ground, usually the tank wall. Means जो हमारे टैंक वॉल है, राइट, वो उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिकल जो कैपेसिटेंस लगाते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमने लगाया है तो उसका एक टर्मिनल सेंसर के साथ है एंड दूसरा ग्राउंड किया है, ओके, एंड वी कैन कैलकुलेट लेवल, राइट। द चेंज इज रिलेटिव टू लेवल और इमर्सन। जो चेंज आता है उसमें, राइट, तो वो हमारा जो लेवल है और हमने जहाँ पे सेंसर नीचे पानी में लगाया है, राइट, तो वो चेंज हम फाइंड कर सकते हैं। एंड हियर फॉर कैलकुलेट पर्पस वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, राइट। एंड जो भी चेंज आता है, राइट, जो लेवल में, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेंसर भी पानी में लगाते हैं। Within design rating, capacitance sensors are not affected by pressure or temperature as they have a no moving part. Means उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग जो here we are using capacitance sensor, so it is not affected to pressure and temperature, and it has no any moving parts. Capacitance sensors can be used for liquids or solids level measurement, but they must be selected and calibrated according to the dielectric constant of the material being used. Here we are using the capacitance sensor for measurement of liquid level and also solid level. But we have to select material, right? They must be selected and calibrated according to dielectric constant. Means जो कैपेसिटिव सेंसर है वो कैलिब्रेट होता है अकॉर्डिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
and here we are using dielectric constant for of material, right, which is used. Material buildup on capacitance sensor may be detected as false level. If a material is contact with sensor, right, then we can get false result. Okay, so here if we want to sensor, then we have to coated with grease or any other material, right? So in next point I have discussed. So viscous liquids or materials such as wastewater, scums or grease that coat the sensor may cause measurement errors. Means here we are using grease, right, for coating on sensor. Okay, so we can reduce error for measurement. You can see in this diagram, uh, here one capacitor is connected with this pipe, right, and its another terminal is connected with tank, and here you can see metal tank wall and grounded reference. Okay, so one terminal is connected to ground and another terminal is connected to the sensor, right, and this is non-conductive insulating medium, and we have a fill up any liquid up to this level, right. So you can see here we have a connected capacitance, right. So through difference between 2 point, right, when we get level of liquid, and here we have to know about dielectric constant, right. Whatever material we have used for practical purpose, right. So this type of setup can be done in capacitance method. uh, in this method यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस लगाया है, तो जो डिफरेंस होगा कैपेसिटेंस का उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेवल मेजर करेंगे, एंड जो हमारा सेंसर है वो कितने डेप्थ पे है, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे लेवल मेजर करेंगे. Manufacturers have various techniques to help compensate for the effects of buildup, right. There are many techniques for measurement of level. Okay, so modern RF capacitance level instruments can be calibrated by inputting calculated levels of capacitance or after installation by physical measurement at two levels, normally a high and low point. Means here we are using radio frequency capacitance level instrument, right. So we can calibrate this instrument, and when we install this instrument, so we can find out the two levels, right. Normally one is high level and another is low, so we can find out two levels and both points can be used for measurement. And in capacitance, typical installed accuracy is 1% of the full scale, right. So next next method is
side glasses or gauges. Tank levels that are not automated or transmitted to the treatment plant control system can be fitted with a simple low cost site gauge, right? मीन्स जो टैंक का लेवल वो हम ऑटोमेटिकली मेजरमेंट नहीं कर सकते थे पहले, राइट? और जो पानी है वो ट्रांसमिट, अगर लेवल बढ़ गया है तो वो वाटर वी कांट transmit, right? So at that time we are using side gauges. So in next diagram, like this, you can see in this diagram 100, 200, 300, 400, right? Here मैन्युअली यहाँ पे 100, 200 ऐसे मार्किंग किए हैं, राइट? सो पहले इस तरीके से लेवल मेजरमेंट करते थे, राइट? सो दिस इज फॉर साइड गेजेस. Okay, so next, external site gauges are not recommended for hazardous liquids where a broken or reputed gauge could result in a spill, or for tanks without spill containment, right? Means जो एक्सटर्नल जो है वो हम इसके लिए यूज करते थे कि कोई ऐसे लिक्विड फिलअप करे तो कांच का जो हमारा ग्लास है वो टूट ना जाए, इसके लिए हमने बाहर की साइड लगाया है. दे आर नॉट सुटेबल फॉर highly viscous or solid bearings fluid where coating or blockages of the gauge would result in false reading. means मीन्स ये जो मेथड है वो हाईली विस्कोसिस जो लिक्विड है उसके लिए सुटेबल नहीं है. एंड अगर कोई लिक्विड है उसमें सॉलिड कंटेनेंट है तो भी ये गलत रीडिंग बताता है. ओके, इन सच केसेस the side gauge pipe is normally installed between valve so that it can be easily removed for cleaning or replacement, right? So for replacement, we are connecting this pipe outside of the tank. You can see in this diagram we have a connected side glass between two valves. So in this diagram, this is side glass, and side glass diagram also see here. Okay, यहाँ पे आप देखो साइड ग्लास इस तरीके का दिखता है. And here we are using two valves, right? ये जो मेथड है उसमें ये हमारा मैक्सिमम लेवल है जो भी हमारा लिक्विड है, और ये हमारा जीरो लेवल है, राइट? तो हमारा लिक्विड जो है वो हम फिलअप कराएंगे यहाँ से, राइट? सॉरी, हमारा जो लिक्विड है वो यहाँ से हम फिलअप कराएंगे. ओके, सो स्टार्टिंग में जीरो लेवल होगा, धीरे 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 लेवल हमारा इंक्रीज होगा जो भी हमारा लिक्विड है. अगर लिक्विड का लेवल मैक्सिमम लेवल से बढ़ गया तो ये वाल हम ओपन करेंगे, राइट? सो ये वाल ओपन करके वो लिक्विड यहाँ पे जाएगा, राइट? फिर ये वाला वाल भी हम यहाँ पे ओपन कर देंगे, ठीक है? सो जो हमारा मैक्सिमम लेवल से लिक्विड इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो हम इस तरीके से दोनों वाल ओपन करके वो लिक्विड को बाहर
ले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज कि हमें लेवल मेजरमेंट करना है, तो ये हमारा साइड ग्लास है। तो साइड ग्लास थ्रू we can measure level of the liquid, right? So in today's session I have discussed two methods, first capacitance and another side glasses or gauges, okay. And in next lecture I will explain infrared and microwave radar, okay. Thank you for listening me.